Okay students, today we will start chapter number 6, life processes. Every organism perform various activities to maintain their life. They perform activities such as nutrition, respiration, transportation, excretion. All these activities are performed by all the living organisms by different methods to live their comfortable life. Here in this chapter we will learn all these activities, that is nutrition, respiration, transportation, excretion in detail. First topic is nutrition. What is nutrition? It is the process by which an organism obtain nutrients. It is the process by which an organism obtains nutrients and utilize that nutrients to obtain energy. Various modes of nutrition are there, but first of all, what is modes of nutrition? Modes means different ways. तो मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कौन सी तरीके से ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर. तो जनरली देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो अपने आप एनर्जी यूटिलाइज प्रोड्यूस करते हैं, अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं. तो बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ प्लांट्स. एंड हेटरोट्रॉपिक nutrition means those organisms which depend on other organisms to obtain their nutrients. In heterotrophic nutrition there are different subtypes which are holozoic, saprotrophic and parasitic, which we will be learning further. Okay, we will learn now both the modes of nutrition, that is autotrophic nutrition and heterotrophic in detail. First of all, it is autotrophic nutrition. Now, as earlier I told कि autotrophic nutrition means organisms that obtain their food by their own, with the help of inorganic sources. So organisms that utilize simple food material, organisms जो सिंपल फूड मटेरियल्स है उनको यूटिलाइज करते हैं. अब ये सिंपल फूड मटेरियल्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? बाय इनऑर्गेनिक सोर्सेज. इनऑर्गेनिक सोर्सेज है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये सारे इनऑर्गेनिक सोर्सेज. तो ऑर्गेनिजम्स दैट यूटिलाइज सिंपल फूड मटेरियल्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स यानी सिंपल लैंग्वेज में हम ये याद रख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. एग्जांपल्स आर ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ये मेथड से जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन होता है उसको बोलेंगे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स. Next comes heterotrophic mode of nutrition. In autotrophic means we learn that they prepare their own food. So heterotrophic means these organisms cannot obtain their own food. They obtain their food from the autotrophs. That is, they depend on autotrophs for getting their food. अब उनको खाना obtain करने के लिए डायरेक्टली कैसे करेंगे? तो दे यूज बायोकैटालिस्ट फॉर ऑब्टेनिंग फूड. दे यूज बायोकैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स. तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स दे कैन ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स. इन दिस मोड, दैट इज इन हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट डिफर्स इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स. ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड, availability of the food and process of obtaining food. तो various modes of nutrition, heterotrophic nutrition कौन से है? herbivores animals है, carnivores, omnivores, saprotrophs, parasites.
ये सारे में प्रोसेस जो है ऑब्टेन फूड ऑब्टेन करने की, ठीक है, इट इज डिफरेंट. सो वी विल लर्न दिस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन नाउ. Holozoic nutrition. So holozoic nutrition means a process of obtaining complex food molecules and breaking them down into simple and soluble molecules. यानी complex food molecules को अंदर लेना और उनको simple और soluble molecules के अंदर break down करना. Now this type of nutrition is performed by herbivores, carnivores and omnivores animals. तो ये सारे यानी herbivores means plant eaters, meat eaters, and omnivores means both. They eat plants and animals. So in holozoic modes of nutrition, a complex food molecule is taken in and then broken down into simple and soluble molecules. Examples are amoeba, cow, goat, dog, humans, etc. Many more animals and animals can be included. Next comes saprotropic nutrition. Now saprotropic nutrition में they depend on dead and decaying matter. Means saprotrops feeds on dead and decaying organic matters. Saprotrops any those organisms which perform saprotropic nutrition. So now we learn in holozoic nutrition that they take in complex food molecules. वो अपनी बॉडी के अंदर complex food molecules जो है अंदर लेते हैं. बट इन सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन व्हाट हैपेंस कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है सेप्रोट्रॉप्स है वो फूड कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी के बाहर ही रख के उनको ब्रेक कर देते हैं एंड देन ब्रेक करने के बाद जो सिंपल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं दे एब्जॉर्ब देम इनसाइड देयर बॉडी. सो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब सिंपल एंड सॉल्युबल molecules. Examples of saprotropic nutrition are fungi, mushroom, bacteria and yeast. The last type of holozoic nutrition is parasitic nutrition. Parasitic nutrition means they are living inside the body or on the bodies of different organisms. यानी मेहमान बन के खाना हजम करना. Means parasites. Parasites means those organisms which obtain nutrition by parasitic nutrition. Parasites lives either inside the body of other organisms or on the body of the other organisms to obtain their nutrition. Examples are Plasmodium, leech, tapeworm, amoeba, etc. Okay, so we have learned two modes of nutrition. First is autotrophic nutrition and second is heterotropic nutrition. Autotroph means organisms preparing their own food, and heterotrophic means organisms which depend on autotrophs for obtaining their nutrition. In heterotrophic nutrition there are three main types of nutrition that are holozoic, which break down their complex food molecules inside the body. Second is saprotropic nutrition, in which saprotrophs depends on dead and decaying organisms. Means they break down complex food molecules outside the body and then absorb it. And the last one is parasitic nutrition, in which they live inside the body of or on the body of other organisms for obtaining their nutrition.